गर्मी लग रही है। तो ये आवाज करेगा, चलेगा?
Om Shanti. Good morning. Yesterday, Bab Dada, morning, evening, he fulfilled us very well. In one word, today's Murli sense is which word that would be? Remembrance. In every third line, Baba has pulled our attention to it. The main subject is remembrance, and the more we remember, the more we experience His love. So continue to give thanks to Baba and continue to take His love and give Him love. And just as you heard in the song, Baba's remembrance has filled our life with so much happiness. We have to remember to finish our sins, and the soul wants to become pure. We have called out to the purifier with so much love, so the soul can become only Satopradhan when there is the pilgrimage of remembrance. So total Muli is on the subject of remembrance, but along with it, Baba said, if any mistake you do at this time, then then great loss is experienced. And those who have done mistake, what words emerge from their mouth, you know. What what will be in drama, I accept that. But what Baba want? Baba says, when I have come, then you must take full inheritance from me. Why you should take less? So Baba wants every child to take full inheritance. So whole Murli is on remembrance. So Baba has cleared it in very simple words, very clearly. So why should we remember him? So 2nd February Murli today. God Shiva speaks, sweet children, remember me and love me, because only I come to make you constantly happy. Question. What words automatically emerge from the lips of the children who continue to be careless? Answer. I will receive whatever is in my fortune. I will definitely go to heaven in any case. Baba says, these are not the words of effort making children. You have to make effort to claim a high status. Since the Father has come to give you a high status, don't be careless. Song. Don't forget the days of your childhood. Om Shanti. Sweetest spiritual children, you understood the meaning of that line of the song. You will now belong to the Father for as long as you live. You belong to limited fathers throughout the cycle from Satyug to Kalyug. Now you Brahmin children only belong to the unlimited Father. So Baba's message is for the whole of the world.
but Baba's Murli is for us. So Baba says to his children only. So you belong to the unlimited Father at present. You understand that you are receiving your unlimited inheritance from the unlimited Father. If you leave the Father, you are not able to receive your unlimited inheritance. Although you explain, no one is content with just a little. If Baba give you little Murli and if you give little understanding, then the soul cannot be satisfied. So Baba is telling a very interesting thing. Why? People want wealth. So soul also wants unlimited wealth from the Father. There cannot be happiness without wealth. Wealth is needed, peace is needed, and what else? And what else the soul needs? A disease free body is needed. Only you children know what there is in the world today and what is going to happen tomorrow. So Baba has to go, and Baba gave us understanding of many things, and we know destruction is standing just ahead. These things are not in the intellect of anyone else. Even if they do understand that destruction is standing just ahead, at present in the abroad, many people seeing the things of climate that now all these things are going beyond, means like going beyond limit. So one sister who has a big role and in the Lokik form, she is the main actor in the climate change things, and she met me. So those who are doing for environment with very force, now they are disheartened. No one understands us. No one listen to us. What can we do now? So even if they do understand that destruction is standing just, and they don't understand what they therefore have to do. So so now what is she doing? She is teaching meditation to them. At least they can have peace for themselves. She doesn't know that the heaven is going to come, but some peace, some power they can get. Only you children understand that war can take place at any time. If there is just a little spark, it doesn't take long for a fire to spread widely. Baba has said this in the 60s, and now we are seeing that scene practically. You children understand that this old world is about to be destroyed, and you therefore have to claim your inheritance quickly from the Father. So, Father is not saying this to frighten us, but how we can make the fast effort in the future. Baba is explaining us for that. When you constantly continue to remember the Father, you remain very cheerful. By becoming body conscious, you forget the Father and you take sorrow. And by becoming body conscious and you forget the Father, take sorrow on yourself.
The more you remember the Father, the more happiness you will receive from the unlimited Father. You have come here to become like Lakshmi and Narayan. Whether Madhuban is far or Madhuban is close, we come running here. There is a lot of difference between becoming the maids and servants of a king and queen and the maids and servants of subjects. There is lot of difference between it. So Baba is giving such a big contrast of becoming servant of king and queen and the maid and servant of subject. The efforts you make now become fixed for all the time, for every cycle at the end. You will all have visions of how much effort you made. The Father even now continues to tell you to check your stage. The sweetest Baba, from whom I received the inheritance of heaven, how much do I remember him? Everything of yours depends on remembrance. The more you stay in remembrance, the happier you will remain. You will then understand that you have come very close. Some become very tired and wonder how far away the destination still is. If they reach their destination, the effort they made will have been worthwhile. The world doesn't know about your destination. The world doesn't even know the one who is called God. So very simple thing that who is our Father, who is God. So all confusion is in it. They speak of God and then say he is in the pebbles and stones. You children now know that you belong to the Father. You now have to follow the Father's directions. And in today's Murli, Baba remembered abroad 2-3 times. Although you may be living abroad, you still have to remember the Father. You still have to remember the Father. You are receiving Sharimat. A soul cannot become Sato Pradhan from Tamo Pradhan without having remembrance. You say, Baba, I will claim the full inheritance from you. So, who are the examples? For them, it is from that they claim the full inheritance. So, just as our Mama and Baba claim their inheritance, I will also make effort and definitely sit on their throne. Who says that we will sit on the throne of Mama and Baba? We will take full inheritance and we will take or we will claim the Father's throne. So, if you are raising their hand, did you understand the question? So, how many of you say that we will take full inheritance from the Father and sit on the throne of Mama and Baba? How many of you say that we can claim half inheritance? So, even half you cannot claim, or any less than that. So, I think you are feeling more cold today. So, you're all of you are having your hands in the shawl.
So Baba is asking this. अभी कुछ Now you बन are गया, raising कुछ your समझ hands. में आया प्रश्न. You have understood the मैं question. गुजराती तो नहीं बोल Now सकती, परंतु I आप cannot आप speak हिंदी समझते Gujarati, हो, मैं समझती हूँ. but I know you all understand तो Hindi. बाबा कहते, बच्चे कहते, जैसे हमारे मम्मा बाबा वर्षा लेते, So हम भी children say, सोचते just as our mama and baba धरती claim पर their inheritance, I will सिंहासन also make बिठाते. effort and definitely sit मम्मा on their बाबा throne. Mama and आज baba दीक्षाधारी become हैं, the prince and तो हम भी princess, बनेंगे. and I will also ज्ञान become गुरु that. सबके लिए, The एक examination ही is the है. same for everyone. तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है. You are taught very little. शिक्षा बाबा की बहुत थोड़ी है. वो कौन सी है? Baba's teaching is अब very आपको पता चल गया little. बाबा की मुरली किस Up till टॉपिक पे now, है. you have understood that on which सिर्फ topic Baba's बाप Murli is महान है. remembrance. Simply remember the one इसको कहा Father. जाता है This is known as the सहज power of राज योग use बल. easy Raj Yoga. तुम समझते हो, योग से बहुत बल मिलता है. You understand that you receive a lot of अनुभूति strength है, by having याद है remembrance. तो कितना You बढ़िया. do understand that याद if you नहीं है perform any तो sinful. आत्मा कमजोर हो जाती. समझते हैं, So, if there is remembrance, कोई there is भी strength, कर्म and if you don't have remembrance, then soul तो becomes सजा weak. भोगना ही You है. do understand that if you perform any बड़ी sinful मुश्किल action, a lot of punishment has to be याद experienced, and नहीं, the status is माया destroyed. ही It डालती है. is in your having remembrance बताया that जाता Maya है, creates obstacles. सतगुरु का निंदक ठोर न पाए. It is remembered that बाबा those who कहते, defame the Sadguru cannot reach their destination. है तो वो Those people सतगुरु. say, those who defame क्या the काम का Guru, किसको but पता ही नहीं. this is for Sadguru. No one understands कहते, about the incorporeal one. It is तुमको remembered that फल देने वाला only है God gives the devotees the भगवान. fruit of their devotion. साधु संत आदि सब किस कैटेगरी में बाबा कम कहते, Sages and सब holy men, in which category they come, are all व्यक्ति devotees. गंगा स्नान करने जाता है. Devotees go to bath in the जब कुंभ Ganges. लगता है तो कितनी भीड़ होती है. पहले तो सैकड़ों साधु संतों की लाइन होती. So when there is Kumbh Mela, there is lot of crowd of sages and saints. Devotees cannot give devotees अगर any fruit. भक्तों को फल दे तो If फिर devotees could give the fruit भगवान to की याद क्यों devotees, करे. why would they remember यही God? भक्ति मार्ग. This is the path सब of devotion. All are devotees. भक्तों को फल देने वाला है. Only God gives the devotees their fruit. ऐसे नहीं कि जास्ती भक्ति करने वाले It थोड़ी isn't भक्ति that करने those who वाले do a lot of उनको worship give fruit to those who do a little worship. No. भक्ति माना भक्ति. Devotion means devotion. भक्ति की फिर भी भक्ति. Either you do lot of worship or बच्चे little worship. बच्चों Devotion को means कैसे वर्षा devotion. देंगे. How could they give the inheritance वर्षा to the तो creation? विजेता से ही मिलता है. The inheritance is only received from the सूरज creator. पधारे या So फिर Baba is explaining very simple सभी things. को इतनी कठिनाई होती. So why people take इस so समय much सबको difficulty to understand these things? At this जब time, ज्ञान मिलता है all are devotees. When you receive this भक्ति knowledge, you करने automatically की stop छूट performing जाती है. devotion. इसको कहना नहीं है भक्ति को छोड़ो, अपने You आप should not say भक्ति to करो. anyone to leave devotion. ज्ञान They leave जिंदाबाद. automatically. There is victory of this ज्ञान बिना knowledge. सब Without this ऐसे knowledge, होंगे. how could there be salvation? सब अपना हिसाब किताब चुकता कर चले जाते हैं. All settle their karmic accounts तुम and बच्चे go जानते back. हो You children now विनाश understand सामने खड़ा है. that destruction is standing just सीखो, ahead. पुरुषार्थ कर Make effort आज before से that पूरा वर्ष and claim your लेना है. full inheritance from the Father. तुम जानते हो You know हम पावन दुनिया में जा रहे हैं. that you are going to the जो pure ब्राह्मण world. बनेंगे Those who वो become इंद्र Brahmins बनेंगे. will become instruments. ब्रह्मा मुख वंशावली You ब्राह्मण cannot receive your inheritance from the बनेंगे Father without तो becoming a आपसे Brahmin. वर्षा ले नहीं सकते.
a mouth-born creation of. सच्चे पक्के ब्राह्मण होंगे, जैसे सब यहाँ सच्चे पक्के ब्राह्मण बैठे हैं। So those who are true and firm Brahmins, they will claim full बाप बच्चों को inheritance. रचते ही हैं A और father creates सभी children in order to give them शिव inheritance. बाबा के तो तुम हो ही, वो You तो belong to Shiv नारायण Baba ऋषि से anyway. भी। सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने लिए। He creates the world शरीर in order हमारे to give you children the वर्षा देते inheritance. हैं, He gives the inheritance आत्मा to bodily भूतल beings. में रहती है, Souls reside up तो above. वर्षा वहाँ प्रारब्ध की बात ही नहीं। There is no तुम question of अभी an inheritance or शायद reward there. प्रारब्ध ले रहे हो, You are now जो making कुछ effort भी and हुआ है receiving your reward. The world doesn't know anything of इस this. मंजिल पर हम जा रहे हैं, दुनिया को मालूम नहीं। बाबा So ऊपर अंडरलाइन कर रहे हैं। the world doesn't अब know समय on which नज़दीक destination we are चला आ going. रहा है। That time is now coming बॉम्ब्स close. भी रखने के The लिए bombs have not been made just तैयारियां to be stored. बहुत हो Many रही हैं। preparations अभी बाप हमको are being made. फरमान करते हैं, The Father is now ordering us. आज्ञा बाबा का फरमान। The Father is now ordering बाबा भी us. कहते मुझे याद करो, Again, Baba is saying, remember तब me. बेचारे Otherwise, you will have बहुत to रोएंगे। cry a great deal at the end. राज विद्या के इम्तिहान में When someone fails an पास होते examination हैं, for a higher तब education, जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। यहाँ he goes and drowns किसी की himself हार out of नहीं, anger. There is no question of बेचारे anger here. At the end, तुमको साक्षात्कार you बहुत will have होंगे। many visions. क्या क्या हम बनेंगे You will also ये नहीं know पता बाबा what को। you will become. बाप का काम है The Father's duty is हर to रोज सुबह शाम every day, morning and सेवा में evening. लगे हुए हैं। Baba is बाप in का this काम है पुरुषार्थ business. कराना। The बाबा Father's कहते duty is हैं to inspire you to make बाबा effort. हम कर्म करते हुए Children याद say, करना भूल जाते, Baba, we forget to have कोई फिर कहते remembrance हैं while performing याद actions. करने की फुर्सत ही Some नहीं say मिलती। that they have no time for तो remembrance. बाबा कहेंगे Baba अच्छा, would then say, समय निकाल कर in याद that करने का case, make time to sit in उसी को बाबा remembrance. चाहते हैं सदा आपका संबंध बना रहे। Although फिर Baba कभी wants us that याद करो, we should be having that कुछ connection समय all the हो time, आगे विशेष but में if we say that we don't have time, then बाप को याद take करो। out some time to sit in आपस remembrance. में जब मिलते हो तो भी When you meet one किसी another, कोशिश remind करें each other. हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने Remind से each other to try and remember तो Baba. याद By आ sitting together, जाएगी। you will be able to stay in अभी remembrance very well. You will receive help. यही बात है, The main thing बाप is को to remember the Father. क्या करना, याद करना। आज दिल को बुद्धि में ये बात छप जाए, बाबा को याद करना है। So today, this should याद get करना printed है to your mind that we have to remember the सिर्फ Father. Even someone, when बाप goes को abroad, याद करना simply है। has to remember one thing. बाप की याद से ही It is हम only by तमो having से remembrance of the सतोप्रधान बने। Father that you will become Satopradhan from बाप Tamopradhan. कहेंगे The Father सिर्फ says, एक बात याद करो, simply remember बाप one को thing. Just याद remember करना the है। Father. आज की मूली किसको भूलेंगे नहीं। So today's Muli, you won't forget. बाबा इतना प्यार से समझा रहे हैं, Baba is सभी की telling याद these करना sweet है। things with so much योग love. बल से सब All of पाप your sins will be भस्म हो burnt away जाएंगे। with the power of yoga. बाप कहते हैं The Father मना says, मना भाव। Man Mana Bhav. संस्कृत शब्द बाबा कह के फिर उसको सिंपल कर देते, So this is the मुझे Sanskrit याद word, करो। and Baba simplifies it. शिव का Remember नाम me, लेके and you will become the masters मोह of the कम world. हो जाती The है। main thing is याद remembrance. करना कहाँ भी जाने की बात नहीं है,
There is no question of going anywhere. Stay at home and बाप को याद करो। simply remember the Father. देखते हैं कि इतनी सूखी बात है, दिल तो बहुत जल्दी Baba फिसल says जाता that है। this is such a इस simple बात को thing, but अंडरलाइन it करना slips so easily. सही So, बात है। so Baba is simplifying it. पवित्र Very नहीं simple to बनेंगे remember. If you don't अगर become pure, you won't be याद able to नहीं stay in कर सकते। remembrance. ऐसी थोड़ी है सब आकर क्लास में पढ़ेंगे। Not मंत्र everyone will लिया come and study in राह class. कहाँ भी चले They जाएं। simply take a mantra सबको and then go एक ही wherever they रास्ता want. तो बाप ने बतलाया ही है। The Father has already shown you the way to become Satopradhan. सातों In प्रहर fact, से when you go to नई your नई center, you hear सूरतें many new दिखेंगी। points. अगर किसी भी If कारण for से some reason you are नहीं unable आ to सकते go, हैं, बरसात पड़ती है, if there is heavy rain कर्फ्यू लगता है, or a curfew कोई बाहर नहीं निकल सकते, and no one is able to क्या go करें? out, what would you do? बाप कहते हैं The Father हर्जा says, नहीं। it doesn't matter. ऐसे नहीं कि शिव के मंदिर में लोटी चढ़ानी ही पड़ेगी। It is not that you सब can offer water remembrance and की milk to an image शक्ति of में Shiva in only a temple. कहाँ भी रहते, Wherever you याद are, करो। stay in remembrance. कोई मुश्किल बात है, नहीं पहुंच सकते हैं, If there is something difficult you cannot पता reach, नहीं था कि doesn't समय matter. आएगा सब घर No बंद one हो knew जाएंगे। that COVID time will come and सब all will be छूट closed in their जाएगा। homes. तो बाबा So बोले Baba says, no matter whatever will happens, just remember चलते Baba. फिरते याद करो While walking and moving around, stay in remembrance. Tell others by remembering the बाप की Father, याद your करने sins से will be हम absolved विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। and you will become deities. अक्षर ही दो हैं, There are just the two बाप वर्षा words. से ही वर्षा लेना है। You have to claim your inheritance from the Father, एक the ही Creator. The Creator is only कितना one. सहज रास्ता बताते He is हैं। showing you such an easy path. बाप को याद करने का मंत्र You have been given the बाप mantra of कहते हैं। remembering the Father. बाबा फिर गीत की लाइन को याद कर रहे हैं, ये बचपन भूल नहीं जाना। The Father says, don't forget the आज days of हंसते this हो, childhood. कल Today रोओगे, you are laughing, but कल बाप tomorrow, को if you forget the बुलाया Father, करो। you will have to cry. बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। You should claim your full inheritance from the Father. ऐसे बहुत है There are कहते हैं, many who say स्वर्ग में तो जाएंगे ना, that they will definitely फिर go to भी heaven so उनको that they will receive पूरा whatever लेंगे। is in their fortune. Such मनुष्य ones are not इशारे called करते effort हैं, makers. ऊंच People make मर्तबा effort to पाने के claim a लिए। high status. अब जब के बाप से ऊंच मर्तबा मिलता है, So now फिर that you can क्यों receive a high चिंता, status from the Father, why should you ऑफर be करते हैं careless? पूरा वर्षा ले लो। So Baba is offering then claim the full inheritance. स्कूल में जो We should नहीं not पढ़ेंगे do any तो mistake. बड़ों के If you आगे don't study at खड़े होने school, you लगेंगे। will have to bow down in front of बाप those who को have पूरा याद studies. नहीं करेंगे Those who don't remember तो the Father बचेंगे fully will become the maids कर्जा and बन जाएंगे। servants of the subjects. इसमें खुश थोड़ी होना चाहिए You shouldn't be happy with कि that. बच्चे सन्मुख विनाश Children, होकर come जाएंगे। here personally बांधेलियां है, हर्जा नहीं, घर and go बैठे back after becoming बाप को refreshed. याद There are करते many in रहते हैं। bondage. It doesn't matter कितना because समय they आते हैं, can मौत सामने है। remember the Father while being at अचानक ही home. लड़ाई शुरू हो जाएंगी। Baba explains so याद much है that the just कल जैसे death is just standing ahead and that the war will सामने begin आ suddenly. जाएगा। एक दूसरे Today को लेते हैं, one say and कोई tomorrow किसी के another say. साथ They मालूम just पड़ जाता,
keep telling each other. वो समाचार सुनता था विश्व का। मस्ती मौज ज़्यादा समय नहीं देने का है कि क्या Baba होगा used to देखते listen हैं to the world समझ news जाएगा। only for 3 minutes. कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया It can be तो seen when a समझ war is about to begin. You सभी can know कहेंगे everything through the आज radio. का They समझ threaten one जाएगा। another. If you do anything wrong, we will do this. फिर They give an advance warning in बाबा this way. साहब जिसकी बात कही So, so बॉम्ब्स why do की they say this? मगरूरी बहुत है They have a lot of समझ जाएगा। arrogance with their bombs that we can do बाप कहते everything. हैं The father says, बच्चे अजय योग children, करते you हुए haven't become होशियार that हुए नहीं। clever with the power of yoga. लड़ाई लग जाए According to the इसी drama, ड्रामा अनुसार खून it डालेंगे। is it is not that the war will बच्चों ने begin just like बराबर समय that. नहीं लिया है You children haven't yet claimed your कहते full हैं आज inheritance. The पाकिस्तान whole में kingdom hasn't yet been established. टाइम चाहिए। 60s में बाबा ने कहा आज बिल्कुल वो सीन चल रही जबकि सारी राजधानी तैयार Nowadays, हो गई। Baba अब told सबको this in खाली करना 60s, and now घर दूसरा this scene is very पाकिस्तान clear. है विश्व के In हर each and देश every बड़े corner अधिकार से of समझा India है। and even abroad, झूठ संदेश there are को लिखने वाला मिल centers. चुका है Although if there is संदेश no center, but the message तो क्या has चलेगा। reached there, so तैयारी even no हो country चुकी is है left. हो रही है। So Rajdhani is रीति prepared 8 में है and तो स्पष्ट being है prepared, ताकि and जब now we can say that 8 108 आता है jewels are clear. थोड़ा सा शायद समय है। For 100 jewels, only little time is सवाल left. क्या है Okay, बच्चे are एक ही बात को 108 खींचने की ready? ज़रूरत है। Uh, ज़्यादा we समय need नहीं little है more time for that, but not much time is left. तो शारद कराते रहते हैं पता नहीं किस समय भी कुछ हो जाए। एरोप्लेन ट्रेन में गिर पड़ती मौत कितना Baba सहज inspires you to जीती make है। effort. You never know when something will happen. सिर्फ Aeroplanes संभालना crash, है trains crash. Death is standing ahead so एक easily. नहीं There are earth सबसे जो tremors. सब काम करती है Earthquakes have to do the most work. अर्थक्वेक कभी ये हिले तब तो सारे मकान आगे गिरे। Only when the खूब earth भूखने से shakes do the लड़े buildings, etc., बाप fall. से पूरा Claim कर्ज your लिए full inheritance before death इसीलिए comes. Therefore, प्रेम से remember the बाप को Father with a याद lot of करो। love. बाबा आपके बिगर हमारा दूसरा Baba, I कोई have नहीं। no one else, only you. Who आपके say बिगर this? हमारा दूसरा कोई नहीं। संबंध है I have no one else, अब only तो you. बाबा के Simply बच्चों continue to remember the Father. सिर्फ बाप को याद करते रहो कितना सहज रीति Baba sits here जैसे and explain छोटे छोटे बच्चों को as कैसे easily as you would explain to little और कोई children. तकलीफ नहीं देता हूँ He सिर्फ doesn't give you any other difficulty. सिर्फ याद करो। Simply remember और Him. काम चिता पर बैठ जो By पंचर sitting on the है pyre of lust, अब you have ज्ञान become चिता पर burnt. बैठ Now sit on the पवित्र pyre हो। of this knowledge and become हमसे pure. पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है When people ask you बोलो what your aim is, शिव tell बाबा them Shiv Baba, जो सबका बाप who है is the father of all, कहते हैं माम says, एकम याद करो constantly remember me alone, तो तुम्हारे विक्रम विनाश and होंगे your sins will be और तुम absolved, तमो प्रधान से and you सतो will प्रधान become बन जाएंगे। Satopradhan from Tamopradhan. कलयुग में In the सबका Iron Age, प्रधान all are Tamopradhan. सर्व का सदगति दाता एक बाप है। The one Father alone is the bestower of salvation बाप for कहते all. हैं The Father says, सिर्फ मुझे याद करो now simply remember तकलीफ me, टल जाएंगी। and the rest will be ये removed. इतना पैगाम तो दे सकते हो ना You can at least give this message. आयु कुछ भी हो छोटा हो बड़ा हो बुजुर्ग हो एक So, समान whatever है your age may बाप be, को याद करो small सबकी or आत्मा पावन
old. So we can say that by remembering God, the soul will become दूसरे को pure. याद करा सकते Only हैं when you yourself stay in remembrance will you be able to remind others of this. तो दूसरे को ऊंची से कहेंगे, नहीं When you तो yourself stay in दिल से remembrance, you will be very keen to tell others, otherwise, it will not be from your कहीं भी heart. हो, The Father जितना explains wherever समय you are, stay in सिर्फ remembrance याद करो, जो मिले as long as उनको you यही can. शिक्षा दो, Whomever you meet, वो give them तो this सामने है, advice. Death is standing बाप just कहते ahead. हैं The Father says, सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, all of you have अब become मुझे याद tamopradhan and करो, impure. Now remember मित्र me बनो, and become pure. आत्मा ही पतित बनी है, It is souls who सुख have become मिलती है, impure in the पावन golden होने age. में। Souls are बाप pure. कहते हैं, याद से ही आत्मा पावन बनेगी। The Father says, only by having remembrance do souls become pure. There is no पैगाम other way. सबको देते जाओ, Continue to give this तो message to everyone, बहुतों का कल्याण करेंगे। and many will और कोई benefit. तकलीफ नहीं देते, Baba doesn't give सब you any आत्माओं other को difficulty. पावन बनाने वाला पतित Only the पावन purifier बनाने Father वाला purifies all souls. सबसे से उत्तम The Father makes उत्पत्ति you कराने all वाला, into the most elevated beings. जो पूज्य थे Those who were worthy वे of फिर worship have become पूजनीय बने, worshippers. रावण राज्य में We become पुजारी worshippers in बने, the kingdom of Ravan. राम राज्य में In the kingdom of Rama, पूजनीय we are बने। worthy of worship. अब रावण राज्य का It अंत is हुआ, now the end of the kingdom of हम Ravan. पुजारी से From being पूजनीय worshipper, we बने। are now becoming worthy of ऐसे worship by remembering the Father. बाप को याद करने से औरों को भी रास्ता बताना है, Show this path बूढ़ी to माँ को others too. सर्विस करनी Even you चाहिए, old mothers should do मित्र service. संबंधियों को भी Give संदेश this दो, message to your friends and सत्संग relatives. लंगर आदि भी अनेक प्रकार के हैं, There are many types of तुम्हारा तो spiritual है gatherings, एक temples, प्रकार, etc. Yours is just the सिर्फ one type. वार्ता करनी Simply चाहिए। give the Father's शिव बाबा कहते हैं, Father's याद introduction. Shiv Baba याद करो says, constantly तो remember तुम me स्वर्ग alone, का and you will मालिक become the बनोगे। masters of heaven. निराकार शिव बाबा Incorporeal Shiv Baba, the सर्वदा bestower of सर्वव्यापी बाबा salvation for all, आत्माओं को कहते हैं, says to souls. शिव बाबा निराकार सर्वदा सर्वव्यापी राधा, Incorporeal Shiv Baba, the आत्माओं bestower को of कहते salvation हैं, for all, says to मुझे souls, याद remember करो, me, and तो तुम तमो प्रधान से from Tamo सतो Pradhan you will become प्रधान Sato बन जाओगे। Pradhan. ये तो सहज है ना It is समझाना, easy to explain this, is it not? बूढ़ियां भी सर्विस कर सकती, Even you old mothers can do service. This is the main thing. शादी मुरादी When में you go बुलाओ to जाओ, weddings, etc., कान में ये बात बताओ, whisper this in their गीता का ears. भगवान The कहते God of हैं, the Gita मुझे says, याद करो। remember me. इस बात को सभी पसंद करेंगे, Everyone will like this. जास्ती बोलने की दरकार ही नहीं, There is no need to say सिर्फ बाप anymore. का Simply give the पैगाम दो। Father's message. कि बाप कहते हैं, Remember me. मुझे याद करो। अच्छा, ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते, Just स्वप्नों feel में that the God is giving समझाता, you inspiration. You have visions in your आवाज सुनाई dreams. देता, You can कि hear a बाप कहते voice. हैं, The Father मुझे याद says, करो, remember me. तो तुम तमो प्रधान से And you will सतो become प्रधान Sato बन Pradhan from जाएंगे। Tamo Pradhan. तुम खुद भी सिर्फ ये चिंतन करते रहो You should also कि मेरा simply just पार हो continue to जाए, think about this, हम and तरु your boat चितौना will go across. बेहद के बाप के बने हैं, और बाप से 21 जन्मों का We now वास्ता belong to लेते the हैं, unlimited Father in a practical way, and we are 21 receiving जन्मों our inheritance of बाप की 21 कृपा births से from the ही Father. So तकलीफ there होती, should be that happiness. It's only when you forget the Father that there is बाप difficulty. इतना सहज
one or other problem continue to come, the Father tells you so easily, consider yourself to be तो souls and आत्मा remember the साक्षी Father, बन and जाओ। you souls will become Sato Pradhan. आज्ञा और बाबा की गारंटी, बस Baba's समझो order and सब Baba's आत्मा guarantee that सब समझेंगे with the तो help of वास्तव remembrance, में you will परम become बाप pure की and प्यारे हैं। Satopradhan. Everyone will ये think रास्ता that you है, have truly found the right कोई path. भी नहीं No one सिखाता। else can show अगर you this कहे path. शिव बाबा को याद करो, If तो sages साधुओं आपके etc. पास told you to पहुंच remember Shiv जाएंगे। Baba, who would go to them? समय ऐसा होगा The time will जब come when प्यार you से won't be able to go बाहर out of निकलना your पड़ेगा। homes. बाप को याद करते करते शरीर You will छोड़ना leave your पड़ेगा। bodies while remembering the अंतकाल Father. जो शिव बाबा सिमरे, Those वो who remember सुखी Shiv Baba होते in हैं। their final moments उन्हें will पल go पल into the clan of Narayan. लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी में आएंगे ना, They will तभी go वे into the dynasty of Lakshmi and राजात्व Narayan. पाएंगे। They will claim बस a royal याद status कैसे over and over करते again, हैं, that's all. चाहे राजा रानी चाहे परिवार में उसी कुल में ही आते रहेंगे। So they will बस continue to come into the सिर्फ same बाप को dynasty याद करो, of royal family. प्यार करो। याद Simply करो remember the Father and तो love प्यार Him. कैसे करेंगे? How can you love Him without सुख remembering मिलता है Him? It is only तो when you प्यार receive मिल जाता happiness है। that you love दुख देने Him. वाले को प्यार नहीं किया You जाता। wouldn't love someone who बाप कहते causes you हैं sorrow. The मैं Father तुमको says, स्वर्ग I का make you मालिक into the बनाता हूँ, masters of इसीलिए heaven. मुझे प्यार करो। Therefore, love बाप me. की मत पर चलना You should चाहिए, follow the Father's बाप directions. की Acha. गोद में रहना है। अगर प्यार होगा तो याद करेंगे, और दूसरा प्यार है If you will have love, then स्वर्ग you पर चलने का। remember. And if you have love, इसलिए then you will कहते continue हैं Baba's ये directions. होंगे तो ही हम कहेंगे So, सच्चा प्यार है। if these two things are there, then only we will जब say that प्यार there करो is true तो love. बाप की मत पर चलना चाहिए ना। You should follow the Father's मीठे मीठे directions. सिक लते बच्चों वृद्ध, To the sweetest, beloved, long lost, and now found याद children, करो love, remembrance, and good morning from the Mother, Father, अपनी Bap बात Dada. की The spiritual father बच्चों says, को नमस्ते। Namaste to the spiritual children. और साथ साथ खूब खूब थैंक्स भी देते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, So, खुशी essence, में रहने के लिए in order to remain happy, याद की मेहनत करनी है। make effort to stay in याद का remembrance. बल The power of को yoga सतो प्रधान makes soul बनाने वाला है। Satupradhan. प्यार से एक बाप को याद Remember the करना है। one Father with a lot of दूसरा, love. ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। In order to claim a सीखना high जो status, तकदीर में होगा, pay full खुद को attention to this study. Don't think पूरा that you will भरोसा receive whatever is in your अधिकारी fortune. बनना है। Stop being careless and claim a right to your वरदान, full inheritance. Blessing. परिवार याद कर रहे हैं सभी कि बाबा आज बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। हद की जिम्मेवारियों को Blessing. May you बेहद become an लिमिटेड embodiment of बनाने वाले remembrance and a conqueror स्मृति of सुमो attachment. नष्ट मोहा भव, And so transform your limited नष्ट responsibilities मोहा into भव के लिए unlimited ones. In सिर्फ order to become a conqueror of स्मृति attachment, सुमो simply transform your form of परिवर्तन नहीं है। remembrance. मोह तब आता है जब ये स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी है, There हमारा is घर attachment when you हमारा have the संतान awareness है। of being a householder, of that इस being your हद house की and that जिम्मेवारी को being your relations. बेहद की Now जिम्मेवारी में transform those limited परिवर्तन responsibilities बढ़ाओ। into unlimited ones. बेहद की When जिम्मेवारी you को बढ़ाने fulfill में your unlimited हद की responsibilities, any स्मृति limited बढ़ ones will जाती है। automatically लेकिन finish. यदि बेहद की जिम्मेवारी को भी
However, if you forget the unlimited ones and just fulfill the limited ones, और ही you बिगाड़ते are हैं। spoiling them even more वो फर्ज मोह का फर्ज हो because जाता है। some duties become a इसीलिए form of the अपने illness सारे of सुखों को attachment. So परिपूर्ण transform your remembrance, it देखिए। become a conqueror of attachment. कितनी गहरी बात है। So such a एक deep मोटी सी thing. कहानी जो है, खुद को पावन बनना, अन्य आत्मा को भी ये संदेश देना, वो याद रहे। So we have to become pure and we have to give message to others फंस जाते हैं। and forget the साधना limited things. ऐसी So तीव्र when the भाव attachment भरी comes, then we forget कि everything. बातें रूपी बादल Slogan: make your speed of समुद्र flying की so ओर fast that you go सोच जाए। across any clouds of situations in a second. और इस मास का सेकंड अव्यक्त इशारा एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा Awake signal with the स्वयं speciality of unity and संपन्न faith होता है। become full of success. किसी भी कार्य की सफलता के There are दो two arms for the श्रेष्ठ success उपाय of हैं। any task: एक आपस आपसी विश्वास और दूसरा faith in one another, unity. यहाँ संगठित रूप में When there सभी के is एक होना, one direction for all in a आपस में collective way, एकीकृत where there विश्वास is है, trust in one वहाँ another, सफलता गले का हार है। success is there as a garland around your संस्कार neck. भिन्न भिन्न है और There are रहेंगे, varieties of sanskars and they लेकिन will remain. But if एक का someone's संस्कार sanskars are causing टकराने वाला conflict, है तो दूसरा then पार्टी नहीं बजाए। the other person should एक not become party चेंज to मी, that. तो Let each एक one change himself, and there can संगठित then be रहेंगे। unity ऐसे all the time. विश्वास द्वारा बाबा के बेहद के कार्य हो रहे। So आगे we भी all can see भगवान की how, with the कृपा help से of unity and trust, Baba's many tasks are being ओम done, शांति। and in future too, this will continue. Om Shanti. ओम शांति। Om शांतिवन Shanti. निवासी समर्पित भाई एवं ट्रायल भाई कृपया ध्यान देंगे। शाम को 6 बजे आप Those सभी who को are कॉन्फ्रेंस रूम में residents आना है। of गुजरात की Shantivan, तरफ you से आप all सभी को will सौगात come to the ऑडिटोरियम conference मिलेगी। hall at 6 टीचर्स p.m. From पहले the Gujarat विशेष zone. You will ध्यान दें। अभी आप receive सभी gift लोग and toli, and all दादाजी the मीटिंग हॉल teachers. में बाप दादा की You will go थैली to the लेकर Dadichi के meeting जाएंगे। hall to receive Bab और जिन Dada's भाई gift. बहनों ने अभी तक सौगात Those नहीं who ली have है not उनसे received अनुरोध है gift up आप till now, सीधा ही you are यहाँ से requested to go to the conference कॉन्फ्रेंस hall हॉल from में here. जाएंगे। वहाँ आप सभी को 8:30 You तक will ही सौगात get मिलेगी। उसके बाद gift सौगात नहीं मिलेगी। 9:30 before बजे 8:30. जो After भाई 8:30 you बहन won't receive अकाउंट्स gift. करते हैं, टीचर्स पहले अकाउंट करती हैं। 9:30 ट्रेनिंग Those who do सेंटर नंबर account, हॉल 3 में पहुंचेंगे, 9:30 जहां you गोकुल will भाई आप reach सभी से training center hall number ग्रेजुएशन 3, शिकायतों where का Gokul निवारण Bhai करेंगे। will शांतिवन मीटिंग meet you and पड़ेगी give you ट्रोमा directions सेंटर about शिवमणि में। laws. जो तीव्र पुरुषार्थ का ग्रुप है, ट्रेनिंग सेंटर नंबर 3 में 6:30 बजे आपका क्लास रहेगा। शांतिवन 25 से शाश्वत योगिक खेती वाले कृपया ध्यान देंगे। शाश्वत योगिक So खेती और these are general ग्रेजुएशन आज होगी announcements. तपोवन में 8:30 बजे। जो भी वहां जाना चाहते हैं गेट नंबर 3 पर पहुंचेंगे और 9:30 बजे ट्रेनिंग प्रारंभ होगी, जिसमें रूरल विंग के कृषि से संबंधित वैज्ञानिक अधिकारी सभी आएंगे। 25 से 30 हार्ड वर्कर भाई 9 बजे प्रातः 1 घंटे के लिए आनंद सरोवर के
1 नंबर गेट पर पहुंचेंगे। उन्हों के लिए कुछ विशेष सेवा है। स्मार्ट कार्ड समर्पित भाई शांतिवन के और ट्रायल कार्ड शांतिवन के, उन्हों को 6:30 बजे जो कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचने वाले हैं वो अपना कार्ड साथ में लेकर के आएंगे। और आज सारे दिन भर की दिनचर्या 10 से 10:30 योग रहेगा। 10:30 से 11:30 मोहन भाई सिंगल का क्लास रहेगा। ब्लेसिंग्स, ब्लिसफुल और बैलेंस। 11:30 बजे आतम भाई टोली वाले का 12:30 तक क्लास रहेगा। कंबाइंड स्वरूप की अनुभूति एवं प्राप्ति। शाम 5 से 6 योग रहेगा। 6 से 7 डॉक्टर सतीश गुप्ता का क्लास रहेगा। अशरीरी निराकारी बीज रूप स्थिति। तो आप सभी समय पर पहुंच जाएंगे। फरीदाबाद सेक्टर 35 की बिंदु सुधा बहन जो 13 वर्षों से समर्पित थी, कुछ समय से स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बाप दादा की गोद में गई है। दूसरा कर्नाटक चिकमंगलूर की यशोदा बहन, उसकी लौकिक माता जी जो 92 इयर्स की थी और 40 वर्ष से ज्ञान में समर्पित थी, वो भी बाप दादा की गोद में गई है। हम सभी लास्ट में 2 मिनट इन दोनों आत्माओं के प्रति शांति योग का सहयोग देंगे। और अभी मधुरवाणी ग्रुप हमारे समक्ष कल बाप दादा की जो मुरली चली उसको अपनी साज, संगीत और आवाज़ में हम सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मधुरवाणी ग्रुप। मिलकर के बाबा आपने आनंद से भर दिया, गुण ज्ञान खजानों शक्तियों से हमको सजा दिया। हम सब प्यारे बाबा को बहुत बहुत कहते हैं शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार अभिनंदन कर लें प्यारे बाबा का, मिलन मना के आनंद। विश्व परिवर्तक अपने साथियों से मिलने आए हैं। मस्तक पर परमात्मा प्राप्तियां देख कर मुस्काए हैं। विश्व परिवर्तक अपने साथियों से मिलने आए हैं। मस्तक पर परमात्मा प्राप्तियां देख कर मुस्काए हैं। होलिएस्ट हम हाईएस्ट रिचेस्ट नशा चढ़ाए हैं। होलिएस्ट हम हाईएस्ट रिचेस्ट नशा चढ़ाए हैं। अविनाशी खजाने हमारे हमको याद दिलाए हैं। परमात्मा प्राप्तियां पाए हैं, हमको संपन्न बनाए हैं। मैं हूँ श्रेष्ठ आत्मा, मेरा बाबा परमात्मा। ज्ञान गुण शक्तियों के हमको कितने खजाने मिलते हैं। समय श्वास संकल्प खजाने जन्म जन्म यह चलते हैं। सर्व खजाने से संपन्न हो बेफिक्र बादशाह बन पे। संबंध स्नेह और प्राप्ति से ये खजाने याद सदा रहते। खजाने जमा करने की विधि बाबा बिंदी बतलाए हैं। खजाने जमा करने की विधि बाबा बिंदी बतलाए हैं। अविनाशी खजाने हमारे हमको याद दिलाए हैं। परमात्मा प्राप्तियां पाए हैं, हमको संपन्न बनाए हैं। मैं हूँ श्रेष्ठ आत्मा, मेरा बाबा पर
परमात्मा। ओ हो 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 हो, आ हा 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 हा। सारे कल्प में सर्वश्रेष्ठ यही समय संगम का है। श्रेष्ठ कर्म के बीज बोने का समय संगम का है। मैं हूँ आत्मा और मेरा बाबा याद सदा ही रखना है। स्वमान में स्थित होकर सम्मान सभी को देना है। बने निरंतर योगी उसकी सहज विधि सुनाए हैं। बने निरंतर योगी उसकी सहज विधि सुनाए हैं। अविनाशी खजाने हमारे हमको याद दिलाए हैं। परमात्मा प्राप्तियां पाए हैं, हमको संपन्न बनाए हैं। मैं हूँ श्रेष्ठ आत्मा, मेरा बाबा परमात्मा। हो 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 हो, आ हा 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 हा। बाबा कहते खुशी के जैसा कोई नहीं खजाना है। अविनाशी खुशियों का खजाना हमको नहीं गंवाना है। गुजरात को बाबा कहते पुण्य का खाता जमा करो। जमा का खाता बढ़ाने में मन को सदा ही बिजी रखो। मन के मालिक राजा बनो उड़ती कला में उड़ाए हैं। मन के मालिक राजा बनो उड़ती कला में उड़ाए हैं। अविनाशी खजाने हमारे हमको याद दिलाए हैं। परमात्मा प्राप्तियां पाए हैं, हमको संपन्न बनाए हैं। मैं हूँ श्रेष्ठ आत्मा, मेरा बाबा परमात्मा। विश्व परिवर्तक अपने साथियों से मिलने आए हैं। मस्तक पर परमात्मा प्राप्तियां देख कर मुस्काए हैं। विश्व परिवर्तक अपने साथियों से मिलने आए हैं। मस्तक पर परमात्मा प्राप्तियां देख कर मुस्काए हैं। होलिएस्ट हम हाईएस्ट रिचेस्ट नशा चढ़ाए हैं। होलिएस्ट हम हाईएस्ट रिचेस्ट नशा चढ़ाए हैं। अविनाशी खजाने हमारे हमको याद दिलाए हैं। परमात्मा प्राप्तियां पाए हैं, हमको संपन्न बनाए हैं। मैं हूँ श्रेष्ठ आत्मा, मेरा बाबा परमात्मा। मैं हूँ श्रेष्ठ आत्मा, मेरा बाबा परमात्मा। मैं हूँ श्रेष्ठ आत्मा, मेरा बाबा परमात्मा। किसी का मोबाइल मिला है, जिस किसी का गुम हो स्टेज के पीछे से देवांग भाई से प्राप्त कर सकते हैं। अभी 1 मिनट हम बाबा की याद में उन आत्माओं को योग का सहयोग देंगे और उसके पश्चात शिव पिया के साथ है एक गीत पर नृत्य होगा।
शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। गीता ज्ञान की बरसात है, गीता ज्ञान की बरसात है। शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है। शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। ये गंगा जल तन में ले धोए, मन उजले तो प्रभु ज्ञान से होए। गंगा जल तन में ले धोए, मन उजले तो प्रभु ज्ञान से हो। राजयोगी बनाए वो बनाए ज्ञानी, राजयोगी बनाए वो बनाए ज्ञानी। ज्ञान मुरली बनाए महादानी, लेने आए भिखारी तेरे हाथ है। शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी मैं जग की समस्या। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी मैं जग की समस्या। आत्मा समझो तो जग खेल है, प्रभु प्रिया से यही मेल है। काम क्रोध की होली जलाए, काम क्रोध की होली जलाए। नरसिंह उनका ये अवतार है। शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। पवित्रता की शक्ति और दिव्यता की शक्ति, यह दो मुख्य बातें हमें अपने जीवन के अंदर धारण करनी है, तभी हम पूज्य मूर्ति बन सकती है। मूर्ति अर्थात सर्व की माननीय, मूर्ति अर्थात सर्व का हमारे प्रति इतना ऊंचा भाव, कितनी सम्मान की दृष्टि, ये पूजनीय है। तो सर्व के पूजनीय बनना, बाबा कहते हैं सदा स्वयं को श्रृंगारी हुई मूर्त बना के रखो। अर्थात एक तरफ पवित्रता की शक्ति, दूसरे तरफ दिव्यता की शक्ति। जो दिव्यता, दैवी गुण हमारे कर्म इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों की चंचलता को खत्म कर देते हैं। अर्थात संकल्प मात्र भी अशुभ भावना अथवा विकार की दृष्टि नहीं जागृत हो सकती। विश्व एकता